Morning class. Ask your friends to quickly join in. Only 12 of you have joined. How about remaining students? I'm sharing the screen, just wait. जी, श्री संजय धोत्रे जी और सचिव श्री अमित खरे जी, श्रीमती अनीता करवाल जी, श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह जी और MIC के चीफ इनोवेशन ऑफिसर डॉक्टर अभय जेरे जी। अब मैं शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का औपचारिक स्वागत करें। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज हैकाथन 2021 ग्रैंड फिनाले के इस अवसर पर मैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपकी सहृदयता और युवा के मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद आप शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाने वाली तकरीबन हर हैकाथन में स्वयं हम सबका मार्गदर्शन करते रहे हैं और साथ ही पार्टिसिपेंट से बात कर उनका उचित मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। आज इस अवसर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी का भी स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हमने हैकाथन 2021 का शुभारंभ 5 जनवरी 2021 के दौरान किया था। 22 जून से 24 जून के मध्य इस हैकाथन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जा रहा है। इस हैकाथन में शिक्षा मंत्रालय 5 अन्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। हमारा प्रयास है कि भारत के खिलौना व्यापार को सभी आयु वर्गों के इनोवेटर्स एवं रिसर्चर्स के साथ जोड़कर एक नई दिशा प्रदान की जाए। खिलौने हर बच्चे के बचपन के साथी होते हैं। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान एवं समग्र व्यक्तित्व विकास में भी खिलौनों और खेलों की अहम भूमिका है। हमने इस हैकाथन के माध्यम से प्रयास किया है कि आपके मार्गदर्शन और अभिलाषा के अनुरूप भारतीय परंपरा, इतिहास, संस्कृति और स्थानीय शैलियों के अनुरूप खिलौनों का विकास हो सके और साथ ही ये खिलौने पर्यावरण एवं बच्चों के अनुकूल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश और शायद दुनिया में अपनी तरह के इस पहले हैकाथन में हमारे देश भर के छात्र छात्राएं
एवं स्टार्टअप उद्यमी बड़ी मात्रा में सहभागी हुए हैं। इसमें 14,130 टीम्स ने रजिस्टर किया है और 17,770 आइडिया प्रस्तुत किए गए। प्रारंभिक स्क्रूटिनी के बाद 1,567 टीमें इस ग्रैंड फिनाले में भाग ले रही है। यह टाइकाथॉन 85 अलग अलग नोडल सेंटर्स पर आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम की घोषणा 26 जून को की जाएगी और विजेताओं को लगभग 60 लाख रुपए की विजेता राशि से सम्मानित किया जाएगा। भारत को टॉय आइडिएशन प्रोडक्शन हब बनाने में यह प्रयास निश्चित ही असरदार साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और विनम्र भाव से आपको निवेदन करता हूं कि इस समय टाइकाथॉन में शामिल पार्टिसिपेंट को और हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब हम अलग अलग केंद्रों में टाइकाथॉन में भाग ले रहे छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद के ओर बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम तमिलनाडु चेन्नई जाएंगे। वी विल नाउ कनेक्ट टू साईनाथ and his team from Vellore Institute of Technology in KCG College of Technology Chennai Center. इन्होंने iCognito नाम के अपना आविष्कार जो किया है वो अब बताएंगे। साईनाथ, वणक्कम। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and distinguished members of the panel. I am Sainath from Vellore Institute of Technology, Chennai, and we are iCognito. Since the pandemic and the start of work from home culture, we've all been experiencing deteriorating mental and physical health. We wanted to find a solution to this issue and realized that it had actually already been discovered thousands of years ago by great Indian rishis. We are deeply honored to present Aura.ai, a revolutionary idea to bring up our ancient Indian art of yoga with a modern twist using advanced artificial intelligence and virtual reality. We've designed an AI-based posture recognizer that tracks your bones and joints and scores you on a scale of 0 to 100, while also providing useful feedback through a voice assistant. This score reflects in our competitive leaderboard. This social media integration motivates users to practice yoga on a regular basis. In addition, we also have a dedicated kids mode to attract young children to perform yoga. We also have a virtual reality simulation where we've created a serene virtual environment with calming background music so that users can focus and concentrate on performing yogasanas. In this virtual environment, we have a video player that streams yoga lessons directly to the user and it writes inside this virtual environment. This unification of AI and VR together gamifies the entire experience and makes yoga more approachable to the youth of India and brings us back to our cultural roots. Happy International Yoga Day. साईनाथ, Yes, sir. ये जो आपने पूरा वर्णन किया, तो क्या इसके कारण अगर ये इंडिविजुअल के लिए काम आएगा या एक से अधिक लोग भी इसमें शरीक हो सकते हैं? दे कैन बी पार्ट ऑफ इट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसका प्रयोग कई जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। Firstly, one person can use a mobile or any other device which is at home to use our artificial intelligence and correct their posture and learn yoga. This can also be used in other situations. For example, it can be used in cricket or tennis to correct your pose and your form. Secondly, it can also be used in senior citizens who have humpback or chronic pain to correct and strengthen their muscles, bones, and joints. Thirdly, it can also be used in physiotherapy centers so that their body can be properly monitored and their posture can be maintained. आप लोग एक डेटा मेंटेन करते हैं कि कितने लोगों ने इस ऐप के द्वारा
योगा पोस्चर को परफेक्ट करने की दिशा में प्रयास किया और जो चेंज चाहते थे बॉडी में वो उनको चेंज मिला। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन अगर आपने उनको ट्रैक किया हो, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है? जी हाँ, we have a leaderboard where people their scores will be showed in real time. तो उन्होंने let's say they have practiced over 1 week, then their 1 week scores will be reflected on leaderboard ताकि they can compete with others और healthy peer pressure build कर सके। ये जो आपकी गेम है वो सिर्फ अंग्रेजी में है या मल्टीलिंगुअल है और यूएन की जो लैंग्वेजेज हैं ताकि दुनिया में पहुंचे, इसके लिए भी कुछ किया है क्या? अभी फिलहाल ये इंग्लिश में ही है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने का प्रोसेस वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इट इनटू अदर लैंग्वेजेस एंड इट इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट अभी, क्योंकि बहुत सारे विजुअल इंटरैक्शंस हैं इसमें, जिसकी वजह से लैंग्वेज की नेसेसिटी उतनी फील नहीं होगी। विजुअलाइजेशंस को देख के ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट इनटू अदर ट्रांसलेशंस एंड वी बिलीव इट इज गोइंग टू बी इजी टू डू दैट। अच्छा, जो दिव्यांगजन है उनको कमेंट्री के द्वारा या कोई और तरीके जोड़ करके हम उसमें कुछ डेवलप कर सकते हैं या कुछ किया है आप लोगों ने? हाँ, वी हैव वॉइस ओवर्स इसमें जो स्पीच टू टेक्स्ट टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करता है, तो अगर कोई पढ़ नहीं सकता या देख नहीं सकता तो वो आराम से सुन के योगासन कर सकता है। चलिए, आज योग का चलन इतना अधिक बढ़ गया है, ये हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान देखा है। अब गेमिंग के जरिए जो आपका ये नया प्रयास है, ये योग के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा देगा और युवाओं को एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिटनेस के लिए भी प्रेरित करेगा। आपने अपने गेम में ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी उन दोनों का जो मिलन किया है, इससे हम और बेहतर ढंग से योग का लाभ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपकी पूरी टीम को, सभी नौजवान साथियों को इस शानदार प्रयोग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे नए नए इनोवेशन Yeah. The students, the reason why I wanted you people to see this particular video is PM Modi is interacting live with the participants of Toykathon 2021. Okay. Anyone heard about Toykathon 2021? Students who are present here, heard of Toykathon 2021? It's something similar to hackathon, but it is Toykathon. You know, you don't know? Somebody tell me yes or no. Are you aware of what is this Toykathon? No? Come on, students, unmute and tell me. No, ma'am. No. Okay. So it's an event where starting from school kids, you know, the children who are studying or pursuing their education in school, to students who are pursuing their education in college, that is graduation level, these are eligible to participate in this particular national level, you know, hackathon. Okay, but it is called as Toykathon, and our college SVCE is also the nodal center for this Toykathon grand finale, which is started from June 22nd. Okay, so today is the last day, in fact. So it's from June 22nd, 23rd and 24th, 3 days of grand finale, digital edition, that is, it is happening virtually. Okay, national level grand finale. Okay, so the main concept is that students need to develop toys. Okay, it could be toys or it could be games which relates to, you know, it could be the culture what we have. Okay,
rich culture, or it could be with respect to rich heritage, or it could be the mythological history or mythological characters. Using anything, we can I mean the participants can develop the toy or the game. Okay, that is the competition. And across India's they had received more than in fact lot of entries were mm, nominated. In fact, finally for the digital edition, that is finale, 200 plus or maybe 300 plus throughout the nation they are shortlisted, and the students have done wonderfully well. Something similar to PUBG. PUBG, they have related the concept to the mythological scripture, that is Mahabharata, very nicely. They have done. And few school students, in fact, they have developed a game called as Aryavrat, where just based on the historical significance of any place in India, complete elaboration will be given along with the video demonstration of what is its historical background and why that particular place has got its prominence. So all this, it's an initiative only to retain our good old history culture, which is having lot of moral values and ethics. And somewhere, nowadays generation, they don't know about the richness of our heritage. So that is the reason the national ministry, that is MHRD, they have taken the initiative, so that the toys, the games what our younger generation will develop, that will be having a very good global market, throughout the world. Okay, that is the concept, because you people are aware of that Western countries, they are very much fascinated about our Indian culture. In fact, we own, I mean, Indian citizens, they don't know the value of our culture and heritage. That is the reason they want to still enhance it, and see to it that at least through games, the younger generation, they will get to know and they will remember things what has happened in the past and how important the values are. So that is the reason I just wanted to see that particular video. I mean, video in the sense it is going live. Okay, PM Modi is interacting with the participants. So it is something nice. In fact, it is surprising that even the school students of grade 7, grade 8, they had participated in the finale, and they have come up with such good ideas. It's very nice, in fact. Okay, now 1 minute. All of you, you people have joined the class through your phone or through the laptop. How is it? Both? Yes, no? How have you joined the class, students? Phone, ma'am. Mobile, ma'am. Okay, fine. No issues. Yeah. So now I'll just share my screen. 1 minute. The screen is visible? Yes? No? Screen is visible, students? Yes, ma'am. Okay. Now, all of you, can you see this? All of you go to this www.menti.com. All of you, open one browser quickly and type in this URL, www.menti.com. Yes, no, done? Have you gone, students? Open one browser either on your mobile device or on your laptop, whichever device you have used to join for the class. Go to this particular URL. Okay, 1 minute.
See, in the chat, I have shared one link. Just click that link, all of you. What you're able to see? Yes, students, come on, respond. Did you receive the chat message, the link what I have shared? Yes, ma'am. What are you able to see? Ma'am, it got open and it's asking for a code, ma'am. Yeah. Now you please enter this particular code, 6498663. Can you see this code? Yes, ma'am. Yeah, enter that particular code. Enter. Yes, ma'am. Okay. Oh, already started, huh? Fine. What did you get? There's one question, right? How many numbers of the element in the okay, how many numbers of element are present in the open IoT architecture? Now you people have to give your answer. You have already given. So 75% of you say that it is okay. Now it's changing. Can you see this change even on your device as well? Students, whatever you are able to view in my screen, the same view you people are getting it. I'm doing some trial and error, trial for something. So I just want feedback from you people. What are you viewing on your screen? The same thing what I'm able to view? No, ma'am, it shows please wait for the presenter to show the next slide. Okay. That means you have done answering the first question, is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Yeah. So first question is done. Where is the correct answer? Sorry. Yeah. This question. Are you able to see the second question, student? Yes, ma'am. Yeah. Which of the following is the way in which an IoT device is associated with data? Internet, cloud, automata, network. Give your answer. I want all of you to participate. None of the options are correct. Okay, a minute. So you please view my screen. The number of elements present in the open IoT architecture is 7. 7 is the correct answer. Okay, so 31% student have given the correct answer. Okay, moving to the next slide. So here I think the answer is none of the options are correct. It is through network, right? What is the answer according to you? None of the options are correct. Okay, fine. Not given. Okay. Yeah, 1 minute. Okay, thank you. I just wanted to do something, so I just wanted to get the feedback from you. Fine. So this is something, a platform where we can have, instant interaction through visual and